Good morning, students. Am I audible? Audible? जने के रिप्लाई करो. अच्छा, आज हमारा टॉपिक अच्छे डिफरेंशिएशन. अच्छा, प्रीवियसली तुमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई दिला. शरद सर पढ़ाई दिले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. राइट और नॉट? डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई दिला प्रीवियस क्लास रे. शेड्यूल अच्छे 3 तारीख रे. पढ़िছো सब? Anyone please reply. Okay. आज हमें पढ़िबा डिफरेंशिएशन. ओके. Suppose मोर फंक्शन ने भी f of x. Let f of x is a function. गोटे फंक्शन मु नेली f of x. अच्छा ताहले f of x रो जो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, then the derivative of f of x with respect to x, derivative of f of x with respect to x, और ताको कहा जाए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of f of x with respect to x. WRT means with respect to. Derivative of f of x with respect to x, और तो हम कह परिया differential coefficient of f of x with respect to x. अच्छा, आहुरी भी तार ना अछि, ताकू भी कह परिया rate of change of f of x with respect to x. एतिक नुहे, आहुरी भी अछि. आहुरी कौन अछि? ताकू भी कह परिया में slope of tangent to the curve y equal to f of x at x comma y. तामने जहाँ को हमें डेरिवेटिव बोली कहउछंदी से केवल डेरिवेटिव नुहे, तार आउट ना अछि. आउट मीनिंग कौन से? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f of x with respect to x. सी भी rate of change of f of x with respect to x. Rate of change of f of x with respect to x. Again से कौन? Slope of the tangent to the curve y equal to f of x at which point? At the point x comma y. Slope कौन? हम 11 क्लास में पढ़ती हो स्ट्रेट लाइन चैप्टर रे. ये चारिटा जगह डेरिवेटिव से तो समान. अच्छा, एको हमें केमती लिखिबा? इज
ताकू लिखा जाए f dash of x और ताकू भी लिखा जाए dy by dx ताकू कहा जाए dy by dx or it is also called as y1 or it is called as y dash सब गुड़ा का समान f dash x कही परिबा dy by dx कही परिबा y1 कही परिबा y dash बोली भी कही परिबा that is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h. Limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h. This is the definition of the derivative or differential coefficient or the rate of change of f of x with respect to x or the slope of the tangent to the curve y equal to f of x at x comma y. Okay. So definitely here limit is involved. Limit agro padicha. Eta bhi tumko differentiability padai thibo agro. Differentiability. This must have been taught. Limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h. Hala? Differentiability eta padai thibo. जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करथुबो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करथुबो पुनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड डेरिवेटिव देन हम कहबा द फंक्शन इज व्हाट डिफरेंशिएबल ओके अच्छा ए जो हम लिखिले लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x by h एटा कोनती कोन derivative or differential coefficient of f of x with respect to x हला अच्छा ए जो मेथड हम एठी डेरिवेटिव बाहर करछंदी this method is called as first principle this method is called as first principle it is also called as formula method or it could be called as definition method this method is called as what definition method okay अच्छा एबे ए फार्मूला को अप्लाई करेगी भाई फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करेगी हमें गोटे दिटा फंक्शन और डेरिवेटिव बाहर करिवा लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h hope everyone has written this समस्त लिख देला कॉपी रे okay अच्छा for example suppose I'll find out the derivative of this function by using first principle f of x equal to cos square 3x f of x equal to cos square 3x here हमें डेरिवेटिव बाहर करिवा ए फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे f of x equal to cos square 3x अच्छा मैं टिके भूली गली कहया तमो h टा कोन h टा होची very small increment in x h is a very small change or increment in x एटा अगरु कुहाई थिबो कंटिन्यूटिव डिफरेंशिएबिलिटी पढा हलाले h is a very small change or increment in x हला अच्छा ए फंक्शन हम डेरिवेटिव बाहर करिवा by applying first principle so this is f of x
Now I'll find out f of x plus h. That will be cos square 3 into x plus h. So joti x achi ta jagare mu x plus h nei jibi. So this becomes cos square 3 times x plus h. 3 ta bhitar multiply kar daba. So this will be cos square 3x plus 3h. So this becomes f of x plus h. Now f dash of x. F dash of x, this is our formula. Limit h approaches to 0. F of x plus h minus f of x whole divided by h. Or this will be equal to limit h approaches to 0 cos square 3x plus 3h minus cos square 3x whole divided by h. Value replace kar deli f of x plus h ra. This is f of x plus h and this is f of x. So now in the numerator, I can apply a square minus b square formula. It हम apply कर periya a square minus b square formula. A minus b into a plus b. So this will be limit h approaches to 0. A minus b. A minus b means cos 3x plus 3h minus cos 3x divided by h. एटी खाली a minus b टा लिखी a plus b लिखिनी. Here only I have written a minus b. This is a, this is b. A minus b लिखी a plus b टा को मैं अलगा एक लिखी देवे. Into limit h approaches to 0 cos 3x plus 3h plus cos 3x. A plus b टा को अलगा लिखी देले. इटा हला a plus b. A minus b को अलगा लिखी देले, a plus b को अलगा लिखी देले. हला? आओ थोड़ा सुना. जरा पचार से repeat करिए अपने. एट जो न्यूमरेटर अच्छे ए न्यूमरेटर मु अप्लाई कली a square minus b square formula. एट a square minus b square formula. A square minus b square formula is a minus b into a plus b. Here I have written a minus b. This is a minus b and this is a plus b. Divided by h जो अच्छे ताको एटी मु लिखी छे. अच्छा तो मन क्वेश्चन आस्तबो जे a minus b रे मु h टा डिवाइड कली a plus b रे काई डिवाइड करली मु a minus b रे डिवाइड करछि a plus b रे डिवाइड करने हले. अच्छा तार रीजन हला देखा जते हमें h जगह रे 0 रिप्लेस करछंदी. If I take h equal to 0 एट जदि हमें h जगह रे 0 नै जिबा लिमिट h approaches to 0 अछि ना. जदि h जगह हम 0 नै जिबा ताले मेटा पाइबा cos 3x minus cos 3x. Cos 3x minus cos 3x is 0 divided by 0. माने एटा मोर 0 by 0 by indeterminate form का आछि. 11 क्लास रे पढिथिबा लिमिट्स चैप्टर रे indeterminate form. एटा indeterminate form का आछि. तणु करे एटा को मते सिंप्लीफाई करिया पड़िबो. एटा और फर्दर सिंप्लिफिकेशन या पई दरकार. किंतु जदि हम h जगह रे 0 पकोउछंदी एटा हमरो 0 हो नाही. h जगह 0 नेले एटा केते आसीबो cos 3x plus cos 3x आसीबो. एटा 0 हो नै. तणु करे जो पार्ट ता 0 by 0 होउची बा इनडिटरमिनेट फॉर्म को अटेन करूची ताको हमें अलगा करले. ए पार्ट ता इनडिटरमिनेट होउची तणु करे एटा को मु कोन करली सेपरेट कर देली. एटा इनडिटरमिनेट होउनी ताको अलगा रखिली. एबे बुझि परला.
जोटा इनडिटरमिनेट होउची ताको अलगा कले जोटा इनडिटरमिनेट होउनी ताको अलगा कले 11 क्लास रे लिमिट्स चैप्टर रे पढ़थिबो इनडिटरमिनेट फॉर्म all these are called as indeterminate forms like 0 by 0 infinity by infinity infinity power infinity 1 power infinity e power infinity all these are called as what indeterminate form it देखा ए पार्ट हमरो indeterminate form होउची तेणुकर एटाको अलगा लिखिले एटा indeterminate होउनी तेणुकर एको अलगा लिखिले understood all of you someone please respond okay अच्छा एबे जो फर्स्ट लिमिट ता देखा दिस पार्ट ए जो पार्ट आज एटा में 11 क्लास रो फार्मूला पढ़थिबो cos c minus cos d 11 क्लास रे cos c minus cos d और लिखाई थो cos alpha minus cos beta किंबा cos a minus cos b एमते लिखाई थो 11 क्लास रे दिस फार्मूला है cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 किंबा होय तो अल्फा बीटा रे तम लिखाई थो किंबा a b रे लिखाई थो जा भी लिखाले किंबा थीटा अल्फा रे लिखाई थो ऑल आर सेम व्हाट इज योर फार्मूला 11 क्लास रे cos c minus cos d फार्मूला okay that formula I'll apply here से फार्मूला को अप्लाई करिवा हला ताले मोर c जगह रे अछि 3x plus 3h d जगह रे अछि खाली 3x से फार्मूला को अप्लाई करिवा so now this is limit h approaches to 0 minus 2 sin 3x plus 3h plus 3x by 2 into sin 3x plus 3h minus 3x by 2 whole divided by h okay minus 2 sin c plus t by 2 into sin c minus t by 2 अच्छा এই পার্টটা তো আমরা কোন সে इनडिटरमिनेट होनी माने एठ में डायरेक्टली h जगह रे 0 रिप्लेस कर दे परिगा जेहेतु ए कोन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं डायरेक्टली एठ में h जगह रे 0 पके दबा h जगह रे 0 पके दबा ये हमरा जीवो cos 3x plus cos 3x इस जगह रे 0 नहीं गली cos 3x plus कर दे cos 3x हले बुझ पाला समझते हैं ओके वेरी गुड अच्छा एबे हम कोन करिबा एट देखला 3x and 3x will cancel कट जीवो कटि गले ए पार्ट हमर रहिला केते sin of 3h by 2 ए पार्ट हला sin of 3h by 2 हला अच्छा एठी आसीबो हमर 3x plus 3x is 6x अच्छा नेक्स्ट पेज को जिबा so this one will be limit h approaches to 0 minus 2 sin 6x plus 3h by 2
into sin 3h by 2 divided by h into second amar thila cos 3x plus cos 3x cos 3x plus cos 3x ହେଇଗଲା 2 cos 3x ଏଠି ଯୋଉ ଥିଲା cos 3x plus cos 3x ହେଇଗଲା କେତେ 2 cos 3x ଏଠି 3x plus 3x ହେଇଗଲା 6x ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଠି 3x କଟିଗଲା sin of what 3h by 2 ଆଚ୍ଛା again ଦେଖା ଯଦି ମୁଁ h ଜାଗାରେ 0 ନେଇଯିବି ଏଇ ପାର୍ଟ ରେ जोटा मु गोल बुलेली एट जदी ए जगह मु 0 नै जिबी हला ताहले ये 0 होउ नाही रादर ये केते होची -2 sin 6x by 2 होची 6x by 2 means 3x होची किंतु एई पार्ट रे जदी मु h जगह रे 0 पके देबी एटा ए पार्ट ता जदी मु h जगह रे 0 पके देबी हला ताले sin of 0 which is 0 divided by 0 माने ए पार्ट ता मोर अगेन 0 by 0 फॉर्म का आछी एटा ए पार्ट ता पुनी 0 by 0 फॉर्म का आछी तेणु कर जेतु एटा 0 by 0 फॉर्म का आछी एको पुनी हमें सेपरेट कर दवा जेतु 0 by 0 फॉर्म का आछी ताले को हम एमति लिखि दवा पुनी लिमिट h approaches to 0 sin of 3h by 2 by h देखा एठी जदी हम h जगह 0 नै जिबा ताले एटा sin of 0 is 0 divided by 0 by 0 फॉर्म का आछी तेणु कर एको अलगा कर देली अच्छा इनटू आ गोटे लिमिट रे लिखि दबा -2 sin 6x plus 3h by 2 into 2 cos 3x ओके सो जो टर्म टा 0 by 0 फॉर्म का आछी ताको मु अलगा कर देली अच्छा तापर तुम लिमिट्स रे फार्मूला ऑलरेडी पढिछ दिस फार्मूला लिमिट x approaches to 0 sin x by x is 1 ए फार्मूला ऑलरेडी पढिछ 11 क्लास रे लिमिट x approaches to 0 sin x divided by x is 1 अच्छा एठी जदी से फार्मूला टका हम अप्लाई करिबा ताले से फॉर्म को आनिया पड़िबो एठी sin of अछि 3h by 2 divided by h रहिले 1 हबनी divided by 3h by 2 गले 1 हबो एठी देखा sin x divided by x ले 1 होची when x approaches to 0 simply sin 3h by 2 divided by 3h by 2 हेले रिजल्ट हमर 1 आसो सो से फॉर्म को आनिबा limit h approaches to 0 sin of 3h by 2 divided by 3h by 2 कर दबा ताको 1 करिया पे अच्छा किंतु डिनोमिनेटर रे मोर 3h by 2 नथिला डिनोमिनेटर रे खाली h थिला ओनली h थिला मु लिखिछि केते 3h by 2 ता माने डिनोमिनेटर रे मोटे 3 by 2 मल्टीप्लाई कर देछि सो डिनोमिनेटर रे 3 by 2 मल्टीप्लाई कर देछि न्यूमरेटर भी 3 by 2 मल्टीप्लाई करी हला एडी देखा डिनोमिनेटर रे h थिला मु केते लिखिछि 3h by 2 लिखिछि ता माने डिनोमिनेटर गोटे 3 by 2 मल्टीप्लाई करछि एडो करी न्यूमरेटर गोटे 3 by 2 मल्टीप्लाई कर देली फार्मूला को आनिया पई अच्छा ये तो हमर 0 by 0 होउनी तेडो करी एटे h जगह हम 0 पके दबा -2 sin 6x plus 0 by 2 into 2 cos 3x अच्छा एबे हमर ए 2 2 गोटा कटि जीवो पुनी एठी ये हे गला 1 into -3 2 टा को आगु ने आसबा
2 sin 3x into a cos 3x. अच्छा तुम पुणी जान 11 क्लास फॉर्मूला 2 sin a cos a 11 क्लास फॉर्मूला trigonometric ratios of multiple and submultiple angles. 2 sin a cos a फॉर्मूला is sin 2a. ए फॉर्मूला रे देखा लेफ्ट रे एंगल जहा अछि राइट रे एंगल ता तार डबल हे जाछि लेफ्ट रे ए अछि राइट रे जाछि 2a ताले सेही फॉर्मूला एठी पकेबा एठी देखा एंगल ता हमर 3x अछि एठी ए जगह 3x नै जा सो एटा हमर sin केते हिजबो 6x हिजबो ताले यार रिजल्ट हे गेला -3 sin 6x. This is the answer. -3 sin 6x. Hello? Ujjwala? Any doubt? Limits तमे जे जानिछो ए टाइप रो जते क्वेश्चन अछि फर्स्ट प्रिंसिपल सब क्वेश्चन कर पिरियो. Hello? It is completely depending upon the concept of limit. ये पूरा पूरी लिमिट कांसेप्ट ऊपर डिपेंड करछ आ किछ नै एते हले ताले ए फंक्शन र डेरिवेटिव हम नेले हमर फंक्शन थिला कि cos स्क्वायर 3x तार हम डेरिवेटिव नेले फर्स्ट प्रिंसिपल ले तार आंसर आसे केते -3 sin केते 6x. अच्छा ए जो इते लंबा प्रोसेस हम गले आगु को हम चेन रूल अप्लाई करिवा चेन रूल अप्लाई कले इते लंबा प्रोसेस आ किछि दरकार नै किंतु ए भी दरकार ए भी काउंसिल सिलेबस रे अछि हला फर्स्ट प्रिंसिपल. अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन देखाओ f of x equal to 3x square plus 1 4 to the power 3 by 4. How? 3x square plus 1 whole to the power के दे 3 by 4. ए फंक्शन में डेरिवेटिव बार करिवा by using by using first principle. Okay. All right. So f of x is 3x square plus 1 to the power 3 by 4. Now I'll find out f of x plus h. f of x plus h माने जोठी x अछि ता जगह मु x plus h खाली रखि देबे ताले एटा जो केते 3 into x plus h रो whole square plus 1 whole to the power 3 by 4. Okay. जोठी x अछि ता जगह हम खाली x plus h रखि दबा आ किछ नै एठी देखा x थिला x जगह हम केते रखि देछि देखलो खाली कोन रखि देछि x plus h रखि देछि आ किछ कर नै हले x जगह रे x plus h रखि देछि बुझि पाले ए पार्टटा आउ केते टीचर एटा h न लेखि कि delta x बोली भी लिखंती del x बोली लिखंती that is also correct. जोठी x अछि ता जगह में x plus h पकाई दउछन नसरीन
अच्छा नसरीन लिसन अगेन हमको दिया है f of x ओके दिस इज f of x हला हमर दरकार अछि f of x plus h f of x plus h केमते हम काढिबा ना जोटी x अछि हला फंक्शन ने जोटी x अछि से x जगह रे आमे कोन करिबा x plus h पके दबा जोटी x अछि तकर कोन करिबा x plus h पके दबा ताले 3x square थिला सो एबे 3x square न होइके 3 into x plus h होल स्क्वायर हबो 1 जेमिन थिला सेम रहइबो खाली x जगह रे x plus h नबो आउ किछ नै हला अच्छा एबे कोन करिबा एटा को टिके सिंपलीफाई कर दबा एटा सिंपलीफाई करले एतिके आसीबो 3x square plus 3h square plus 6hx plus 1 whole to the power 3 by 4 तो सिंपलीफाई कर देले आउ किछ करने 3x square plus 3h square plus 6hx plus 1 हे गला एटा हम a plus b whole square पके देली a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab सेतरे 3 मल्टीप्लाई कर देले अच्छा so this is f of x plus h now this is our formula f dash x limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h replace the values so limit h approaches to 0 3x square plus 3h square plus 6hx plus 1 to the power 3 by 4 minus 3x square plus 1 to the power 3 by 4 whole divided by h खाली वैल्यू रिप्लेस कर लिया किसी करने हला खाली वैल्यू रिप्लेस कर देले f of x plus h रो वैल्यू और f of x रो वैल्यू हला एको रिप्लेस कर देले अच्छा 11 क्लास रे लिमिट्स रे गोटे फार्मूला तम पढिथिबो दिस फार्मूला limit x approaches to a x to the power n minus a to the power n by x minus a limit x approaches to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a and the result is n a power n minus 1 ए फॉर्मूलाटा पढिथिबो पढिछटा 11 क्लास लिमिट्स रे someone please reply 11 क्लास रे हां गुड अच्छा देखला एटी न्यूमरेटरटा एटा जदि मु x बोली भाबिबी ताले एटा x पावर n अछि एटा को मु या सहित समान बोली भाबुची एटा समदे a पावर n बोली भाबुची त न्यूमरेटरटा मोर अछि x पावर n न्यूमरेटरटा अछि मोर ताले x पावर n minus a पावर n करेक्ट or not न्यूमरेटर मोर हला x पावर n minus a पावर n फार्मूला को आउ एबे हमें जाकू इवैल्यूएट करछनी ताकू तमे कंपेयर करो न्यूमरेटर टा x पावर n minus a पावर n ए फार्मूला छै नै कहलो someone please reply न्यूमरेटर x पावर n minus a पावर n, ए फार्मूला छै नै
अच्छी वेरी गुड। अच्छा किंतु देखिला डिनोमिनेटर टा x माइनस ए अच्छी एटा देखो x पावर n माइनस a पावर n फॉर्म अच्छी एटी ताले हमर x माइनस a रहिले हमें से फॉर्म टा पके परिबा एटी देखला x माइनस a अच्छी की एटा x माइनस a अच्छी ना नहीं वेरी गुड हले सो न्यूमरेटर हमर x पावर n माइनस a पावर n अच्छी एटा अच्छी किंतु डिनोमिनेटर टा मिसिंग अच्छी ताले डिनोमिनेटर को हमको से बेला फॉर्म को आनिले से ना हमें फॉर्म ना पकेबा ताले पके परिबानी अच्छा ताले न्यूमरेटर टा हमर ठीक फॉर्म अच्छी डिनोमिनेटर को फॉर्म को आनिबा ताले डिनोमिनेटर को फॉर्म को आनिया पई हेले मते डिनोमिनेटर टारे x माइनस a आनिया को पड़िबो एति आनिया पड़िबो ता माने मु न्यूमरेटर जहा लिखिछि डिनोमिनेटर टा सेम लिखबी बट विदाउट पावर लिखबी देखो ए जो पावर को जदि हम हटे दवा ताले x माइनस a ही जाउनी ता माने डिनोमिनेटर रे हमें विदाउट पावर से को लिखिबा न्यूमरेटर जहा लिखिछो डिनोमिनेटर टा सेम टा लिखिबो बट विदाउट पावर 3x square plus 3h square plus 6hx plus 1 whole to the power 3 by 4 minus 3x square plus 1 whole to the power 3 by 4. So numerator mu लिखि देले x power n minus a power n. Denominator mu लिखिबी x minus a. x minus a माने denominator mu लिखिबी केते 3x square plus 3h square plus 6hx plus 1 minus 3x square plus 1. एबे देखिला ए जो टर्म टा मु लिखिली हले एबे जोडा लिखिली देखिला ए फॉर्म रहला ना नहीं x पावर n minus a पावर n by x minus a देखिला ए फॉर्म रहला ना नहीं देखिला एटा जो फॉर्म अछि एटा सेम फॉर्म अछि ना नहीं फॉर्मेट हां वेरी गुड दुटा जगह समान फॉर्म अछि अच्छा किंतु एबे ए जो डिनोमिनेटर लिखिली एतिका एटा मु डिनोमिनेटर लिखिछि एटा मोर आगुरु डिनोमिनेटर थिला कि ए जोडा लिखिछि एबे ए जोडा गार पकेले देखा एटा आगुरु थिला प्रीवियस स्टेप रे थिला कि प्रीवियस स्टेप रे एटा डिनोमिनेटर थिला कि नथिला मु ताको फॉर्मेट को आनिया पई लिखिछि जबरदस्ती ता माने मु डिवाइड करछि माने मल्टीप्लाई करबी ना नहीं एटा ता आगु नथिला मु डिवाइड करछि निजे हला डिवाइड करछि माने मल्टीप्लाई भी करबी ताले ए जति कि मु डिवाइड करछि एबे फॉर्मेट को आनिया पई ताको एबे मल्टीप्लाई करबा सो इनटू लिखिबा लिमिट h approaches to 0 3x square plus 3h square plus 6hx plus 1 minus 3x square plus 1 divided by h कोटा आसला एठी आगुर h गोटे डिवाइड के थिला एठी h गोटे डिवाइड के थिला ताको लिखि देले एठी हले एबे देखा एटा हम डिवाइड करथिले तण कर ताको गले एठी मल्टीप्लाई कर देले डिवाइड हेतला ताको हम कोन गले मल्टीप्लाई कर देले अच्छा एठी गोटे h थिला आगुरु ताको हम डिवाइड कर नथिले एठी ताको डिवाइड कर देले ए बुझ पाला समझते someone please reply बुझ पाला हां वेरी गुड अच्छा
अच्छा एबे देखो एई टर्म टा हमरो एई टोटल टा एबे देखिला एई फॉर्म से तो समान हे जाइछि एई फॉर्म से तो समान हे जाइछि लिमिट x approaches to a x to the power n minus a to the power n by x minus a फॉर्म से तो समान हे जाइछि ताहले तार रिजल्ट टा को हमें एई फॉर्म में लिख परिबा ना नहीं ताहले तार रिजल्ट टा को हमें n a to the power n minus 1 फॉर्म में लिख परिबा हले जेहेतु से फॉर्म को पळे आसी ताको हमें n a to the power n minus 1 लिख परिबा अच्छा व्हाट इज n हियर दिस इज n is 3/4 n is 3/4 into a what is a is 3x square plus 1 to the power 3/4 minus 1 हले देखो एटा को मो कोन गली n a to the power n minus 1 फॉर्म को आनली बुझ पाले एतिके समझते n a to the power n minus 1 ए फॉर्म को आनली ओके ओके अच्छा तापर एई पार्ट टा पुणी और बळिछि एट देखो ए ब्रैकेट जो अछि न्यूमरेटर रे ताको जदि हमें खोली दबा ए जो ब्रैकेट अछि ताको जदि ओपन कर दबा देन 3x square कटि जिवो दिस 3x square कटि जिवो 1 1 भी कटि जिवो सो हमर बळिबो केते हो आ बळिबो लिमिट h approaches to 0 हले एबे बळिबो 3h square plus 6hx divided by h एति बळिबो limit h approaches to 0 3h square plus 6hx divided by h clear 3x square कटि गला हले 1 1 कटि गला बुझबला अच्छा आउर एको सिंपलीफाई करिवा 3/4 3x square plus 1 3/4 minus 1 3/4 minus 1 is minus 1/4 अच्छा एटा में h रे गोटे न्यूमरेटर रे कॉमन नै परिबा h न्यूमरेटर गोटे h कॉमन आसीबो आसिले से डिनोमिनेटर h सहित कैंसिल हो जिवो न्यूमरेटर h कॉमन से डिनोमिनेटर h सहित कटि जिवो कटि गले आसीबो केते हो 3h plus 6x एति आसु 3h plus केते 6x अच्छा एबे कोन करिवा h जगह रे 0 पके दबा कारण आउ कोन से इंडिटरमिनेट फॉर्म नाही सो h जगह में वैल्यू रिप्लेस कर दबा एठी h जगह रे 0 नै जिबा 0 नै गले 3 into 0 is 0 plus 6x 0 plus 6x is only 6x एठी लिखि दोछि कोडा रे देखा ऊपर सो रिजल्ट हला 3/4 3x square plus 1 to the power minus 1/4 into 6x अच्छा एठी गोटे 2 काटि दबा हमें हले 2 काटि दले आसिला 3x रहिबेटी so 9x by 2 3 into 3x 3x square plus 1 to the power minus 1/4 this is the final answer understood all of you बुझ पाला समझते हैं ओके वेरी गुड अच्छा ताहले एठी जो क्वेश्चन हम करूछंदी ये कंप्लीटली लिमिट रो कांसेप्ट के ऊपर डिपेंड करूछ सो लिमिट रो कांसेप्ट जे जानि छ ताल फर्स्ट प्रिंसिपल रो कोनोसी क्वेश्चन कष्ट नुहे
all the questions you can do. Hello? Past principle सब question रे limit रा formula ही apply हो, आउ किसी apply हो बार नहीं. Hello? Clear? आउ example देबी ना इतनी की हबो को. इतनी example करी बेरी हो ना आउ example देबी को. एक और please. Okay. अच्छा हो देखा. आउट exponential देखा मतलब उसी. Hello? Exponential. Suppose f of x is e to the power 3x square minus 1. Here's exponential function. नहीं 11 क्लास रे फंक्शन चैप्टर तो पढ़ाई थिला मु पढ़ाई थिले तार ग्राफ बनै थिले सब एक्सपोनेंशियल हला से क्लास के अटेंड करथिला 11 क्लास रे एक्सपोनेंशियल ग्राफ थियरी थिला फंक्शन चैप्टर रे हला e to the power के अछि 3x square minus 1. Okay. So f of x plus h, this will be e to the power x जगह हम पके दबा x plus h. हला जोटी x अछि तार जगह सीधा x plus h रखि दो आगे से x जगह x plus h रख दो हला अच्छा एक गुटे सिंपलीफाई और कर दवा. So is e to the power 3x square plus 3h square plus 6hx minus 1. Okay. This is f of x plus h. And this is f of x. अच्छा एबे फॉर्मूला को छिबा. Formula is f dash x equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h और से गला limit h approaches to 0 e to the power 3x square plus 3h square plus 6hx minus 1 minus e to the power 3x square minus 1 whole divided by h. Okay. Value replace कर देले, अब कुछ करने, है ना? Only the values are replaced. अच्छा, एबे कौन करिबा? एक फॉर्म आनिया पई एटा को चाहिले एमती भी लिख परिबे. हले एट देखो जो पावर टा थिला ताकू मोटा अलगा वे रे लिखिछ. एतिक थिला मोर पावर e रो हले e रो पावर थिला 3x square plus 3h square तापर थिला 6hx तापर थिला -1. मु बोली e पावर 3x square को एट लिखि देली -1 टा पाखु नै आसिली.
आ बढ़िला केते ए दुटा टर्म बढ़ला ताको एठे अलगा लिखिदेली हला दिस स्टेप इज वेरी इंपोर्टेंट ई रो पावर रे चारिटा टर्म थिला मु 3x स्क्वायर माइनस 1 को गोटे लिखि देछि पुनी 3h स्क्वायर प्लस 6hx को गोटे लिखि देछि ए स्टेपटा बुझ परला चारिटा टर्म जदि ऐड हेक अछि ताको हमें कोनोसी ऑर्डर रे भी लिख परिबा हले कोनोसी ऑर्डर जे लिख परिबा मु 3x स्क्वायर माइनस 1 को गोटे लिखिछि पुनी 3h स्क्वायर प्लस 6hx को आउट लिखिछि हले ता रीजन कोन आउ टिके पर तमे जानि परिबो अच्छा तमे 10 क्लास रे फार्मूला पढि दिबो x to the power m plus n is same as x to the power n into x to the power n 10 class रे पढि दिबो पढनाटा 10 class की 9 class रे पढि दिबो x to the power m plus n is x to the power m into x to the power n correct or not अच्छा एटा देखला सही फॉर्म नहीं एटा सो सही फॉर्म को हम ब्रेक कर दवा हले सही फॉर्म को ब्रेक कर दवा ब्रेक कले को मु लिख परिबे लिमिट h approaches to 0 e to the power 3x square minus 1 into e to the power 3h square plus 6hx minus e to the power 3x square minus 1 whole divided by h x to the power m plus n is x to the power m into x to the power केते n से फॉर्म ने असले हले ताको ब्रेक करके दीटा कर देली मु बुझबला अच्छा एबे देखलो न्यूमरेटर रो e to the power 3x square minus 1 कॉमन आछि ना नहीं न्यूमरेटर रे e to the power 3x square minus 1 is common or not reply me numerator रे e to the power 3x square minus 1 that is common okay अच्छा से कॉमन टा एक्चुअली आनिया पई हम एमती ब्रेक करथिले एठी हला एटी ब्रेक करिवार रीजन टा से थला एम जो को सेपरेट करिके हम लिखिथिले दैट इज द रीजन हला कॉमन आनिया पई एठी लिखु जे limit h approaches to 0 e to the power 3x square minus 1 is common common गले एबे आसीबो केते e to the power 3h square plus 6hx minus 1 whole divided by h e to the power 3x square minus 1 टा मु कॉमन नै गेली हला कॉमन नै गेला आसीबो केते e to the power 3h square plus 6hx minus 1 whole divided by h okay this much will get अच्छा एबे देखलो ए जो टर्म टा अछि e to the power 3x square minus 1 एथरे कोन से h इन्वॉल्व अछि की ए जोटा मु गोल बुलाई छी बहुत ठीक करके एथरे कोन से h अछि की h अछि एथरे नाही अच्छा नाही माने इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ h हला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ h तामने h र वैल्यू जहां भी हो या पर किछि फरक पड़िबो नाही तण कर ताको हमें लिमिट रो बाहर को नि जिबा जेतु से h रो वैल्यू ऊपर किछि भी डिपेंड करूनी तण कर ताको लिमिट रो बाहर को नि गेली हला
नहीं गले हमर रहिला लिमिट h approaches to 0 e to the power 3h square plus 6hx minus 1 whole divided by h एति बढ़ला हले जेतु से h ऊपर किछि भी डिपेंड करूने तणु कर ताको गले लिमिट रो बाहर को नै गले हला अच्छा पुणी तुम 11th क्लास रे एक्सपोनेंशियल गोटे लिमिट रो फार्मूला पढिथिलो एक्सपोनेंशियल लिमिट फार्मूला मन अछि अच्छा ताको तो रिप्लाई रे लिखिबा तम पई कष्ट हबो हला का जो डिवाइस तुम देखुथबो सेतरे मैथमेटिकल फार्मूला लिखे भारी कष्ट हबो हला but this is the formula I guess you must remember limit x approaches to 0 e to the power x minus 1 by x is 1 a formula just start this हला मन अछि ए फार्मूला limit x approaches to 0 e power x minus 1 whole divided by x is 1 अच्छा आउ गोटे पढिथिबो भी ए टाइप रो आउ गोटे फार्मूला पढिथिबो एटा limit x approaches to 0 a power x minus 1 by x is log a to base e provided a is greater than 0 or no limit x approaches to 0 a power x minus 1 by x is log a to base e but a should be a number greater than 0 हला अच्छा एट देखिलो न्यूमरेटर टा जदि एटा को हम x बोली भाबंती जदि एटा को हम x बोली भाबिबा त न्यूमरेटर टा हमर e पावर x minus 1 हे परिबो जोटा गोल बुलेछि मु सेडो जदि x बोली भाबिबी त न्यूमरेटर टा कोन हे गेला e पावर x minus 1 हे गेला हला अच्छा ताले एतिक मोर हला x ए जोटा गोल बुलेली सेटा मोर हला x एटी तो सेटा नाही डिनोमिनेटर सेटा अछि कि न्यूमरेटर टा ठीक फॉर्म रे अछि अना नहीं डिनोमिनेटर टा फॉर्म रे अछि कहलो डिनोमिनेटर फॉर्म रे अछि कि न्यूमरेटर मोर ठीक फॉर्म रे अछि e पावर x minus 1 हां डिनोमिनेटर फॉर्म रे नाही कारण फार्मूला टा को एनालाइज करो फार्मूला रे e रो पावर जेतिकी फार्मूला रे देखा e रो पावर जेतिकी डिनोमिनेटर सेतिकी रहइबा दरकार हले एट देखा e रो पावर अछि x डिनोमिनेटर रे मोर रहइबा दरकार x ताहले जाय कि मो एटा को 1 बोली लिख परिबी e रो पावर जदि अछि x डिनोमिनेटर रहिबो x ताहले मु ताको 1 रे बोली लिख परिबी एट किंतु e रो पावर जहा अछि डिनोमिनेटर मोर सेटा नाही हले तण कर डिनोमिनेटर सेटा को मते आनिया को पड़िबो ताहले जाय कि मु फार्मूला को आनि परिबी आनिया पड़ियो माने मते डिवाइड करिया पड़ियो सेति की हले e to the power 3h square plus 6hx minus 1 by 3h square plus 6hx एबे कहले एटा फॉर्म के आसिला न नहीं देखिला ए फॉर्म रहला नहीं ए फॉर्म रे
कहला ही फॉर्म रे एबे फॉर्म का आसीगला अच्छा ए फॉर्म आनिया पई हेले हमको ता सहित किछटा ऑपरेशन करिया पड़ला त माने मु कोन कली गोटे डिवाइड कली अन नहीं मु 3h स्क्वायर प्लस 6hx एतिकी डिवाइड करछि एई टर्म टा मु डिवाइड कली एटा त आगु नथिला डिनोमिनेटर रे आगु डिनोमिनेटर h थिला किंतु h रे हमर काम हो नथिला तेणु कर हमको एतिकी डिवाइड करिया पड़ला सो डिवाइड जदी कले ताल ताको मल्टीप्लाई करिबा जति डिवाइड कले सेति मल्टीप्लाई करिबा डिवाइड करछन केते 3h स्क्वायर प्लस 6hx ताको मल्टीप्लाई करिबा अच्छा आगु गोटे टर्म डिवाइड हेक थिला h गोटे डिवाइड हेक थिला सो ताको डिवाइड करिबा हला सो एटा हमें जेहेतु डिवाइड कले फॉर्म को आनिया पई तेणु कर ताको इठी मल्टीप्लाई कर देले आगु h ता थिला ताको तो छाडी दे परिबा ना जे थिला ता कोन छाड दबा ताको छाडीबानी छाडले भूल हे जिवो तेणु कर h को कोन गली डिवाइड भी कर देली ए बुझ पाला रिप्लाई करो वेरी गुड सो जति के हमें डिवाइड कले सेति कोन कले मल्टीप्लाई कर देले अच्छा ताले एटा हमर जो फॉर्म रे फार्मूला अछि वर्तमान से फॉर्म को एग्जैक्टली आसी गला त माने या जगह में 1 लिखि दबो त रिजल्ट केते 1 होय सो एति के जगह में 1 लिखि दबा हले सो एति के जगह में एबे 1 लिखि देबे सो e to the power 3x square minus 1 ए जोटा बॉक्स भीतर मु लिखि छि दैट इज 1 हले कारण से फॉर्म का आसी गला एटे बे देखा न्यूमरेटर रे h इज कॉमन और नॉट देखला न्यूमरेटर रे h कॉमन अछि ना नहीं अच्छा h कॉमन ले h कटि जिवो h कॉमन ने गले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर h कटि जिवो कटि जिवो ना नहीं यस अच्छा कटि गले मते एतिक मिलिबो ना नहीं कहलो h कॉमन नै कि काटि दला परे मते मिलिबो 3h plus 6x limit h approaches to 0 एतिक मिलिबो limit h approaches to 0 3h plus 6x हला अच्छा वेरी गुड अच्छा एबे कोन करिबा एटा तो कोनोसी हमर इंडिटरमिनेट फॉर्म आउ नाही 0 by 0 कि इंफिनिटी by इंफिनिटी e पर इंफिनिटी 1 पर इंफिनिटी एमते किछि भी नाही इतरे किछि भी नाही माने मु इस जगह डायरेक्टली 0 पके दे परिबे ए जगह जे 0 पके दबा एटा केता हो गइला 6x हबो ना नहीं ए जगह 0 नै गेले ए जगह 0 नै जबा केता बडा 6x हबो नहीं ताले मोर आंसर हे गला 6x e to the power 3x square minus 1 this is the answer understood all of you 6x into e to the power 3x square minus 1 this becomes the answer okay बुझिपाला समझते no doubt very
तामाने जत्ता क्वेश्चन में कले एते सबुतरे 11 क्लास रो आमे जो लिमिट्स पढिथिले तार कांसेप्ट ही अप्लाई होछ आउ किछ होने हला। अच्छा ए सब फार्मूला को यूज करके सॉरी ए सब आमे जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढिले ए फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करके डेरिवेटिव रो सब जगह फार्मूला आसीछ हला। फिजिक्स रे तो डेरिवेटिव फार्मूला तुम सब पढिथिबो 11 क्लास रे फिजिक्स रे पढाइथिबो 11 क्लास रे डेरिवेटिव थिला कि तमरो डिफरेंशिएशन बा डेरिवेटिव थिला 11 क्लास रे सीबीएस रे अल्प 11 क्लास रे अछि पुनी 12th रे अछि सीएचएससी कथा मु एतरा जानि ने हला। अच्छा 11 क्लास रे पढिछो वेरी गुड हला। अच्छा ताले जो डेरिवेटिव रो फार्मूला सब आसीची हला all those formulas are derived by using this by using this first principle only हला ताको अप्लाई करी से सब जगह हिच एबे से डेरिवेटिव फार्मूला डा हम सब देखबा हला। जानि छ डेरिवेटिव सब फार्मूला ओके और से फार्मूला डा मत लिखि दउसी तापर सेकंड हाफ रे हमें आउ आगु बढ़िबा formulas of different differentiation differentiation ala process of taking this derivative ala आम डेरिवेटिव जो प्रोसेस रे नउछंदी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट डिफरेंशिएशन। एटा सब बेसिक फार्मूला तुम जानथिबो d by dx of any constant is 0 because derivative means rate of change constant तो के बदलिबोनी सो तार rate of change किसी नाही so that is why the derivative of any constant with respect to x is 0. Number 2 d by dx of x to the power n is n x to the power n minus 1 हला d by dx of sin x is cos x d by dx of cos x minus sin x d by dx of tan x is x square x d by dx of cot x minus cos x square x d by dx of sec x into tan x ये सब फार्मूला तुम डिराइव कर परियो बाय अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल d by dx of cosec x minus cosec x into cot x d by dx of log x to base a
is 1 by x log e to base a or 1 by x log a to base e. It vulgarly mark करो. Numerator लिख ले e to base a, denominator लिख ले a to base e. है? But a should be greater than 0. Number 10. D by dx of ln x is 1 by x d by dx of a per x is a per x log a to base e. Here again, a should be greater than 0. Number 12, d by dx of e to the power x is e to the power x. Number 13, d by dx of sine inverse x is 1 by root over of 1 minus x square. D by dx of cos inverse x is minus 1 by root over of 1 minus x square. D by dx of tan inverse x (1 by 1 plus x square). D by dx of cot inverse x is this much. eso formula पढ़िছো 11 क्लास रे एटा सुन अच्छा 11 क्लास रे चेन रूल थिला कि तमरो चेन रूल पढ़िছো 11 क्लास रे चेन रूल पढ़िছো ना अच्छा के लिखुसी यस के से लिखुसी नो ओके हां लिखि देले फार्मूलाडा ओके next is differentiation algebra. Algebra of differentiation. ये भी जानी थी बोलते 11 क्लास रे d by dx of any constant into f of x constant बाहर कसिबो d by dx of only f of x जानी थोड़ा
d by dx of f of x plus minus g of x plus minus h of x माने गुड़ाए फंक्शन जदि एमती ऐड ही अछि this will be equal to d by dx of f of x plus minus d by dx of g of x plus minus, like this it will continue. अच्छा d by dx of dita function मानकर multiply करेज f of x into g of x dita function multiply करेज. Then this will be g of x into d by dx of f of x plus f of x into d by dx of कितने g of x. है ना? Number 4. d by dx of f of x by g of x. Divide each. Then this is g of x into d by dx of f of x minus f of x into d by dx of g of x divided by g of x whole square. This support क्यों? है product rule and quotient rule तक होती. अच्छा, so now you'll have gap of 10 minutes. Okay. Again 9:15 a.m. second session. Okay. So join me again at 9:15 a.m. Okay.